हेलो गाइज। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पैरामेडिकल के अंदर जो कोर्सेस होता है, फिजियोथेरापी, डीएमएलटी, ओटी एंड एनेस्थीसिया, ऐसे टोटल 11 कोर्सेस है पैरामेडिकल के अंदर। तो उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो लास्ट ईयर भी पूछा है, तो इस बार भी पूछ सकता है, 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने जाए हो उसका रिलेटेड तो 1 2 3 क्वेश्चन पूछेगा ही। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज का। Which device is used to immobilize a broken limb? Which device is used to immobilize a broken limb? ऑप्शन दिया हुआ है AED, splint, ऑक्सीजन मास्क, defibrillator. तो which device? ऑप्शन B is correct, splint. Splint is a device is used to immobilize a broken limb. Option B is correct. Next is emergency number for an ambulance in India. तो ये 108 है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन D is correct, 108. Next question is a person with severe blood loss. A person with severe blood loss may go into diabetes, hypertension, shock, fever. Option C is correct, shock. A person with severe blood loss may go into shock. तो ब्लड लॉस जो है ये सर्कुलेशन को, जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको रिड्यूस कर देगा एंड लीडिंग टू हाइपोवोलेमिक शॉक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन ट्रोमा केयर व्हाट डज ABCDE स्टैंड फॉर. तो इसका जो ABCD स्टैंड फॉर बोला है, तो ABCD जो है ये ए का मतलब बताया है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग एंड सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, डी का मतलब होता है डिसेबिलिटी एंड ई का मतलब होता है एक्सपोजर. तो यहाँ देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू स्टॉप सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग. व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू स्टॉप सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग. ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाइंग कोल्ड वाटर, elevation and pressure, giving food, CPR. So which technique is used to stop severe external bleeding? Option B is correct, elevation and pressure. Elevation and pressure is a technique is used to stop severe external bleeding. तो एलिवेशन एंड डायरेक्ट प्रेशर जो है ये कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज What is a defibrillator used for? Defibrillator is used for, option दिया हुआ है measure blood pressure, clear airway, deliver electric shock to the heart and start IV fluids. तो defibrillator used for, option दिया हुआ है तो ऑप्शन C is correct, deliver electric shock to the heart. Defibrillator used for deliver electric shock to the heart. Option C is correct. Next is fracture of the spine. Fracture of the spine must be handled with wheelchair, immediate movement, cervical collar and spinal board and oxygen mask. So fracture of the spine must be handled with, option C is correct, cervical collar and spinal board. Next is which is the most common site for checking pulse in emergency. So which is the most common site for checking the pulse in emergencies? तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है रेडियल, ब्रांकियल, कैरोटिड, फीमोरल. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी जो है इन द नेक में रहता है, इज इजिएस्ट एंड फास्टेस्ट टू चेक. नेक्स्ट इज What is the priority in managing a burn patient? What is the priority in managing a burn patient? Option दिया हुआ है cleaning the burn, giving food, airway and breathing, giving painkillers. So what is the priority in managing a burn patient? Option C is correct, airway and breathing. Next is what type of shock occurs due to allergic condition? एलर्जिक कंडीशन में कौन सा टाइप का शॉक अकर्स होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक एंड एनाफाइलेक्टिक. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट,
anaphylactic shock. Anaphylactic shock occurs due to allergic condition. Next is, when should the recovery position be used? When should the recovery position be used? Option दिया हुआ है unconscious with no breathing, unconscious but breathing, during CPR, during seizures. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, unconscious but breathing. When should the recovery position be used? Option B is correct, unconscious but breathing. Option B is correct. Next is, तो आईसीयू का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है जनरल पेशेंट केयर, सर्जिकल ड्रेसिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल पेशेंट एंड वैक्सीनेशन. तो आईसीयू का मेन पर्पस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ क्रिटिकल पेशेंट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next is, which machine is used to assist or replace breathing in ICU? Which machine is used to assist or replace breathing in ICU? Option दिया हुआ है ECG, dialyzer, ventilator, defibrillator. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेंटिलेटर. वेंटिलेटर मशीन जो है इज यूज टू असिस्ट और रिप्लेस ब्रीदिंग इन ICU. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो वेंटिलेटर जो है ये पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है. जब मतलब पेशेंट मतलब अपनी खुद की मर्ज़ी से ब्रीथ नहीं कर पाते तो वेंटिलेटर में बिठा के ये पेशेंट को ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन. व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन रेंज? तो इसका जो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन रेंज है ये 95 to 100% है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नॉर्मल SpO2 levels are between 95% to 100%. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, which device is used to monitor heart rate and rhythm in ICU? Which device is used to monitor heart rate and rhythm in ICU? ऑप्शन दिया हुआ है वेंटिलेटर, मॉनिटर विद ECG लीड्स, ग्लूकोमीटर एंड नेबुलिजर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मॉनिटर विद ECG लीड्स. Which device is used to monitor heart rate and rhythm in ICU? Option B is correct, monitor with ECG leads. Next is, normal respiratory rate in adult. Normal respiratory rate in adult. तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 to 20 breaths per minute. 10 to 20 minutes breaths per minute. Next is, an ICU patient with low pressure may need. An ICU patient with low blood pressure may need. ऑप्शन दिया हुआ है sedatives, vasopressors, antibiotics only and antacid. ऑप्शन बी इज करेक्ट, vasopressors. An ICU patient with low blood pressure may need vasopressor. Next question is, what does GCS stand for in ICU assessment? What does GCS stand for in ICU assessment? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज कंट्रोल सिस्टम, जनरल क्लिनिकल समरी, ग्लासगो कोमा स्केल एंड गैस्ट्रोकार्डियक स्कोर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लासगो कोमा स्केल. नेक्स्ट इज, which tube is inserted into the windpipe to maintain airway in ICU? Which tube is inserted into the windpipe to maintain airway in ICU? ऑप्शन दिया हुआ है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कैथेटर एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब. ऑप्शन डी इज करेक्ट, IV कैनुला. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, endotracheal tube. Which type is inserted into the windpipe to maintain airway in ICU? Endotracheal tube. Option C is correct. Next is, what is the purpose of a central venous catheter in ICU? Purpose of a central venous catheter in ICU. ऑप्शन दिया हुआ है यूरिन कलेक्शन, फीडिंग, लॉन्ग टर्म IV एक्सेस एंड ऑक्सीजन डिलीवरी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉन्ग टर्म IV एक्सेस. What is the purpose of a central venous catheter in ICU? Option C is correct, long term IV access. Next is, which is a life threatening electrolyte imbalance?
नीचे में कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है? लो कैल्शियम, हाई पोटाशियम, हाई सोडियम, लो आयरन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई पोटाशियम। नेक्स्ट इज septic shock. Septic shock in ICU is caused by trauma, allergic reaction, severe infection, heart failure. The option C is correct, severe infection. Septic shock in ICU is caused by severe infection. Option C is correct. Septic shock जो है ये result from a severe systematic infection. Option C is correct. Next is, what is the monitor using a pulse oximeter? What is monitored using a pulse oximeter? तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट वाल्व्स। What is monitored using a pulse oximeter? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये मेजर करता है ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड नॉन इन्वेसिवली, विदाउट इन्वेशन। तो monitor using a pulse oximeter, option C is correct, oxygen saturation. Next is, which ICU monitor value indicates heart rate? Which ICU monitor value indicates heart rate? Option दिया हुआ है SpO2, RR, HR, BP। तो which ICU monitor value indicates heart rate? Option C is correct, HR means heart rate, measure a beats per minute. Option C is correct. Next is, which one is not a common ICU infection risk? Which one is not a common ICU infection risk? Option दिया हुआ है UTI, pneumonia, pressure sore, common cold। तो which one is not a common ICU infection risk? Option D is correct, common cold। common cold जो है ये एक less serious है, and UTI, pneumonia जो है are frequent ICU infection। Next is, which nutrition method is used? Which nutrition method is used when oral feeding is not possible? Which nutrition method is used when oral feeding is not possible? Option दिया हुआ है normal diet, parenteral nutrition, exercise diet, herbal diet। Option B is correct, parenteral nutrition। Which nutrition method is used when oral feeding is not possible? Option B is correct, parenteral nutrition। Next question is, what is the primary goal of a surgical asepsis? What is the primary goal for surgical asepsis? Option दिया हुआ है pain relief, infection prevention, improve digestion, enhance oxygenation। तो option B is correct, infection prevention। What is the primary goal of surgical asepsis? Option B is correct, infection prevention। Next question is, which of the following is used for sterilizing surgical instrument? Which of the following is used for sterilizing surgical instrument? Option दिया हुआ है alcohol, boiling water, autoclave and soap। Which of the following is used for sterilizing surgical instrument? Option C is correct, autoclave। Next is, what is the function of a suction machine in OT? What is the function of a suction machine in OT? Option दिया हुआ है provide oxygen, remove fluids like blood, provide anesthesia, monitor heart rate। Option B is correct, remove fluids like blood। What is the function of a suction machine in OT? Option B is correct, remove fluids like blood। सक्शन मशीन जो है ये रिमूव करता है ब्लड एंड सिक्रीशन, बोल सकते हो वोमिट, टू कीप द एरिया क्लियर। Next is, which is responsible for handing instrument to the surgeon? Which is responsible for handing instrument to the surgeon? Option दिया हुआ है OT technician, circulating nurse, scrub nurse, anesthetist। तो option C is correct, anesthetist। तो option C is correct, scrub nurse। Which is responsible for handing instrument to the surgeon? Option C is correct, scrub nurse। स्कूप नर्स जो होता है ये असिस्ट करता है सर्जन विद द इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेन्स स्टेरिलिटी। नेक्स्ट इज, व्हिच सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर सर्जिकल हैंड स्क्रूबिंग?
Which solution is commonly used for surgical hand scrubbing? Option दिया हुआ है डेटॉल, स्प्रीड, पोविडाइन आयोडीन, प्लेन वाटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोविडाइन आयोडीन. पोविडाइन आयोडीन जो है ये एक एंटीसेप्टिक है एंड यूज्ड बिफोर सर्जरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज PPE. PPE स्टैंड फॉर इन OT. तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्टैंड फॉर इन ऑपरेशन थिएटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्टैंड फॉर इन ऑपरेशन थिएटर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजुअल कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन द OT? व्हाट इज द यूजुअल कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर इन द OT? ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू, ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर, ग्रीन, येलो. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर. What is the usual color of an oxygen cylinder in the OT? Option B is correct, black with white shoulder. Next is which instrument is used to make incision in surgery? Which instrument is used to make incisions in surgery? Option दिया हुआ है forceps, retractor, scalpel and scissors. तो which instrument is used to make incisions in surgery? Option C is correct, scalpel. स्कैल्पेल जो है ये एक स्मॉल एंड बोल सकते हो शार्प नाइफ है, यूज़ किया जाता है कटिंग ड्यूरिंग सर्जरी. स्कैल्पेल. नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग सर्जरी? व्हाट इज यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल ड्यूरिंग सर्जरी? ऑप्शन दिया हुआ है रिट्रैक्टर, आर्टरी फोर्सेप्स, नीडल होल्डर. ऑप्शन डी प्रोब. ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टरी फोर्सेप. आर्टरी फोर्सेप जो है ये आर्टरी फोर्सेप्स क्लैम्प एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल. नेक्स्ट इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑल्सो नोन एज. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन दिया हुआ है माइनर सर्जरी, ओपन सर्जरी, की होल सर्जरी एंड इमरजेंसी सर्जरी. लेपारोस्कोपिक सर्जरी इज ऑल्सो नोन एज की होल सर्जरी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को की होल सर्जरी भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ड्रेपिंग इन सर्जरी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रेपिंग इन सर्जरी? ऑप्शन दिया हुआ है डेकोरेशन, वार्मथ, मेंटेन स्टेरिलिटी, कंफर्ट. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रेपिंग इन सर्जरी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेंटेन स्टेरिलिटी. Purpose of a draping in surgery, option C is correct, maintain sterility. Next is the person responsible for anesthesia in OT is. Person responsible for anesthesia in OT is, option दिया हुआ है surgeon, scrub nurse, OT technician, anesthesiologist. So the person responsible for anesthesia in OT is, option D is correct, anesthesiologist. Next is which of the following is a hemostatic agent used in surgery? Which of the following is a hemostatic agent used in surgery? Option दिया हुआ है saline, betadine, adrenaline, dextrose. तो which of the following is a hemostatic agent used in surgery? Option C is correct, adrenaline. तो adrenaline क्या करता है? ये ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बाय कंस्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल. नेक्स्ट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड विदाउट ओपनिंग द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड. ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड विदाउट ओपनिंग द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड ऑप्शन डी इज करेक्ट, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी. minimally invasive surgery. A surgical procedure performed without opening the body cavity is called minimally invasive surgery. Next is first step before entering the OT. First step before entering the OT: eat food, wear casual clothes, perform surgical hand wash, check mobile phone. Option C is correct, perform surgical hand wash. First step before entering OT, option C is correct, perform surgical hand wash. Next is
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनेस्थेसिया? एनेस्थेसिया का पर्पस क्या है ड्यूरिंग सर्जरी? ऑप्शन दिया हुआ है टू रिड्यूस फीवर, टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट पेन, टू रिड्यूस हार्ट रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू प्रिवेंट पेन। पर्पस ऑफ एनेस्थेसिया ड्यूरिंग सर्जरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू प्रिवेंट पेन। नेक्स्ट इज general anesthesia causes. General anesthesia causes sleep only, loss of memory, unconsciousness, local numbness. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, unconsciousness. General anesthesia causes, option C is correct, unconsciousness. Next question is, which instrument is used to maintain airway under general anesthesia? Which instrument is used to maintain airway under general anesthesia? Laryngoscope, otoscope, and thermometer, sphygmomanometer. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, laryngoscope. तो laryngoscope एक इंस्ट्रूमेंट है एंड यूज टू मेंटेन एयरवे अंडर जनरल एनेस्थेसिया. नेक्स्ट इज which drug is used? Which drug is commonly used to induce general anesthesia? कौन सा ड्रग इज कॉमनली यूज टू इंड्यूस जनरल एनेस्थेसिया? पैरासीटामोल, प्रोपोफॉल, साल्ब्यूटामोल एंड एमोक्सिलिन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोपोफॉल. तो प्रोपोफॉल जो है ये एक फास्ट एक्टिंग आईवी ड्रग है एंड यूज किया जाता है इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया. नेक्स्ट इज स्पाइनल एनेस्थेसिया. Spinal anesthesia is given into the arm, neck, spinal canal, abdomen. Option C is correct, spinal canal. Spinal anesthesia is given into the spinal canal. Next question is, which vital sign must be continuously monitored under anesthesia? Which vital sign must be continuously monitored under anesthesia? Option दिया हुआ है height, weight, heart rate, vision. Option C is correct, heart rate. Which vital sign must be continuously monitored under anesthesia? Option C is correct, heart rate. Next is, what is the role of anesthesia machine? Anesthesia machine का role क्या है? To perform surgery, to monitor glucose, to deliver gases like oxygen and anesthetics, and to clean instrument. Option C is correct. Role of anesthesia machine is to deliver gases like oxygen and anesthetics. Next is, which gas is commonly used with oxygen during general anesthesia? Which gas is commonly used with oxygen during general anesthesia? Option दिया हुआ है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम. ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड. Which gas is commonly used with oxygen during general anesthesia? Option C is correct, nitrous oxide. Next is the antidote for opioid overdose in critical care is. The antidote for opioid overdose in critical care is adrenaline, atropine, naloxone, and diazepam. Option C is correct, naloxone. The antidote for opioid overdose in critical care is, option C is correct, naloxone. Next is local anesthesia causes. Local anesthesia causes full body unconsciousness, numbness in a specific area, slow heart rate, fever. Option B is correct. Local anesthesia causes numbness in a specific area. Option B is correct. Next question is, which anesthetic is used for numbing the skin or wound area? Which anesthetic is used for numbing the skin or wound area? Option दिया हुआ है morphine, xylocaine, ketamine and atropine. Option B is correct, xylocaine. Which anesthetic is used for numbing the skin or wound area? Option B is correct, xylocaine. Xylocaine या lidocaine, xylocaine और lidocaine भी बोल सकते हो, is a common local anesthetic. Next is, an anesthesia circuit is used for. An anesthesia circuit is used to monitor glucose, provide fluids, deliver gases to the patient, remove waste. Option C is correct, deliver gases to the patient.
An anesthesia circuit. An anesthesia circuit is used to, option C is correct, to deliver gases to the patient. Next is the term pre-medication in anesthesia mean. एनेस्थेसिया में प्री मेडिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है फूड बिफोर सर्जरी, ड्रग्स गिवन बिफोर एनेस्थेसिया, फिजिकल एक्सरसाइज, पोस्ट ऑफ मेडिसिन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ड्रग्स गिवन बिफोर एनेस्थेसिया. द टर्म प्री मेडिकेशन इन एनेस्थेसिया मीन्स ड्रग्स गिवन बिफोर एनेस्थेसिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an inhalation anesthetic? नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक है? ऑप्शन दिया हुआ है मिडाजोलाम, आइसोफ्लुरेन, डाइजिपाम, आइबोब्रोफेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइसोफ्लुरेन. which of the following is an inhalation anesthetic? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आइसोफ्लुरेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the depth of anesthesia. The depth of anesthesia can be assessed by checking patient's weight, observing respiratory rate and reflexes, measuring height, asking question. So the depth of anesthesia can be assessed by, option B is correct, observing respiratory rate and reflexes. तो आज यहीं पे रख देते हैं एंड नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन बचा है और एक वीडियो में बात करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.